Yes, good morning children. Welcome to the English class. So today we are going to continue our lesson on number 9. The name of this lesson is The Secret Garden. This extract is taken from Francis Hodgson Burnett novel. Okay, this chapter is about a young girl called Mary Lennox. After the death of her parents, Mary goes to live with her uncle, Mr. Carven. Now, Mary stumbles upon a secret garden in the manor's ground, and this discovery brings about a positive change in her life. Now, children, I would like to share a video for better understanding. The Secret Garden. You feel happy when you go to a garden, don't you? That's because the trees and fresh air relaxes us. Do you know, gardening too makes us happier and healthier. So much so that it turned rude little Mary into a cheerful girl. After her parents passed away, Mary Leno came to live with her uncle, Mr. Craven, at his Misselthwaite Manor. She was lonely, spoilt, and rude child. She disliked Martha, her uncle's servant, whereas Martha felt sorry for Mary. Martha often spoke to Mary about her family and her brother Dickon. One day, Martha showed Mary the way into Manor's gardens. After his wife had passed away, Mr. Craven had closed one of the gardens that had belonged to his wife and hid the key. Mr. Craven did not want anyone else to enter the garden. Mary wanted to see the garden, but no one knew where the key was. She had seen a robin sitting on the other side of the wall and wondered if it lived in the secret garden. One day, Mary saw the robin standing near the wall. There was something shiny in the earth. It was the key to the garden. As she felt along the wall for the door, the wind blew some of the plants near the wall to one side, and Mary saw the door. She opened the door, entered inside the garden, and walked around with the robin, who wanted to show her everything. The garden was surrounded by high walls. The plants were brown and looked dead because it was the end of winter. The trees had grown dense and decrepit. While walking around the garden, Mary noticed spring flowers growing above the earth. The garden was not dead. Every day, Mary came to the garden and cleaned every inch of it, keeping it all a secret from Martha. It was her secret garden. When Mary wanted some gardening tools, Martha asked her brother Dickon to help Mary with it. Dickon was a kind, friendly 12-year-old boy who could talk to birds and animals. Mary and Dickon became good friends. She showed him the garden and made him promise to keep it a secret. Dickon saw that the dead rose trees had little green parts on the inside. They could save them with some hard work. Both Mary and Dickon spent that spring working in the garden. By summer, everything was alive again. The garden and the smell of the fresh earth made her strong. Her unkindness and sorrows disappeared because of the beauty and serenity in the garden. The little cross girl had become a friendly, kind, and loving girl. Why don't you research a bit and find out why gardening makes us happy and healthy? Now, I hope you have to understood this video well now. So now let's start our the topic. That is, today we will study as a dictation word meaning and question answer of this lesson. Okay, student, let's start.
Yes, so question number one is dictation word. The very first meaning is thrilled. 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 Okay, student, thrilled, which means very excited and pleased. Number second, wistfully. Wistfully. Wistfully, which means thinking sadly of something that is impossible or that happened in the past. किसी ऐसी चीज के बारे में दुखी होना या अनसंभव होना कि मतलब जो चीज पहले है, जो इम्पॉसिबल है, जो असंभव है, और that happened in the past, जो past में हो गई है. Number third is melancholy. Melancholic, which means expressing feeling of sadness. Number fourth, manor, which means a large old house. Number fifth is decrepit, yes, which means as it's very bad and worn out condition because of age and neglect. Yes, decrepit means ये तो बहुत खराब हालत में. Okay, now let's start the word meaning of this chapter. Number one, manor. A large old house with land belonging to it, usually found in the countryside, especially in Europe. यूरोप के अंदर जब हम बात करते हैं कि large old house, जो बड़ा पुराना जो घर है, with land belonging to, किससे belong करे, belonging to usually found in the countryside, मतलब जो country के side में वो पाया जाते हैं large long house. Okay, तो उसको हम बोलते हैं manor. Number second, heaven. So a place that is safe and peaceful. Okay. Number third, thrilled, very excited and pleased. Okay. Number four, wistfully, thinking sadly of something that is impossible or that happened in the past. नंबर फिफ्थ, melancholy, expressing feelings of sadness, मतलब कोई दुखी अवस्था होती है जब हम फील करते हैं sadness, है ना. Now number six, cross, quite angry. So cross in this chapter, according to a chapter, the cross means quite angry. Okay. Number seven, yes, decrepit, in a very bad and worn out condition because of age and neglect. नेग्लेक्ट मतलब जो हमारे बहुत ही एज, बहुत ही साल हो गए, नेग्लेंस होती है, उसके कारण जो चीज क्या हो जाती है, कंडीशन उसकी बैड हो जाती है. जैसे इस चैप्टर के अंदर हमने बताया था कि जैसे जो हमारे जो मैनर के अंदर जो गार्डन था, जो सीक्रेट गार्डन था, वो क्या था, सीक्रेट गार्डन कैसा था, डिक्रेपिट. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर. क्वेश्चन नंबर वन, हु वाज मिस्टर Craven, what was the name of his house? Yes, answer is Mr. Craven was Mary Lennox's uncle. Okay, the name of his house is Michael's White. So अब हमारा जो मिस्टर क्रेवन कौन थे और उनका हाउस कैसा था, उसका हाउस कैसा, कहाँ था, कैसा था. यस, द मिस्टर कैरवन वाज मैरी लेनक्स अंकल. जो कौन थे, मिस्टर कैरवन मैरी लेनक्स के अंकल थे. द नेम ऑफ हिज हाउस, उनके हाउस का जो नाम था वो क्या था, मिसेल वाइट. ओके स्टूडेंट, नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड. What did Mary do on her first few days at the manor? मैरी ने अपने जो फर्स्ट, जो पहले जो थोड़े जो दिन थे, मतलब जो डेज थे, फर्स्ट फ्यू डेज की हम बात कर रहे हैं, उन दिनों जो मैरी थी वो कैसे रहती थी, उसका जो बिहेवियर था वो कैसा था. ओके, नाउ द मैरी ऑफन क्रॉस द पीपल अराउंड हर इन द फर्स्ट फ्यू डेज एट द मैनर. जो मैरी हमेशा ऑफन क्रॉस, हियर क्रॉस मींस क्वाइट एंग्री, जो लोग उसके चारों तरफ थे, जो उससे वो क्या रहती थी, वो नाराज रहती थी. सो इन द फर्स्ट फ्यू डेज एट द मैनर, द फर्स्ट फ्यू डेज मैनर के कुछ थोड़े दिनों में हम बात करते हैं, जो पहले के जो थोड़े दिन थे उसमें जो मैरी थी हमेशा जो उसके चारों तरफ जो लोग थे उनसे वो नाराज रहती थी. क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाई वाज वन ऑफ द गार्डन्स शट. अब बताइए कि इनके अंदर जो मैनर में जो गार्डन थे उनमें से एक गार्डन बंद क्यों था. आंसर इज द वन ऑफ द गार्डन्स वाज शट बिकॉज मिस्टर क्रेवन wives had died. It was his wife's garden. जो उसमें जो गार्डन, उसमें से एक गार्डन जो बंद था क्योंकि जो मिस्टर क्रिवन की जो वाइफ थी वो डेथ हो गई थी, एंड इट वाज हिज वाइफ्स गार्डन. जो गार्डन था वो उनकी वाइफ का गार्डन था, इसीलिए उस गार्डन को बंद कर दिया गया था. क्वेश्चन नंबर फोर, हाउ डिड मैरी ओपन द सीक्रेट गार्डन. मैरी ने सीक्रेट गार्डन को कैसे खोला. द आंसर इज द मैरी ओपन द सीक्रेट गार्डन विद द की विच शी फाउंड नियर द वॉल. मैरी ने सीक्रेट गार्डन को किससे खोला,
की से खोला, जो उसको कहाँ पर मिली थी, फाउंड नियर द वॉल, जो उसको वॉल के पास, दीवार के पास मिली थी। Now, question number fifth. How did Mary feel when she discovered the garden? मैरी ने क्या फील किया, क्या कैसे महसूस किया, when she discovered मतलब उसने उस जब discovered the garden, उसने जब गार्डन को खोजा। आंसर इज मैरी वॉज हैप्पी व्हेन शी डिस्कवर्ड द गार्डन। मैरी क्या थी, बहुत ही खुश थी जब उसने गार्डन को डिस्कवर किया, खोजा। ओके, नंबर 6, what street was the garden in and when Mary found it? गार्डन की जो स्टेट गार्डन कैसा था जब मैरी ने उसको पाया। अब बात चल रही है किसकी, कि हम आपको बताना है कि गार्डन की उस समय कंडीशन, स्टेट मींस कंडीशन कैसी थी। नो आंसर इज मैरी फाउंड द डिक्रेपिट गार्डन। डिक्रेपिट मीन्स आपको बताया था वो कंडीशन, उसकी जो कंडीशन थी वो क्या थी, गार्डन की बहुत ही खराब थी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिक्रेपिट। इज इन अ वेरी बैड एंड वर्न आउट कंडीशन बिकॉज ऑफ एज एंड नेग्लेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, हु वाज डिकन, हाउ डिड ही हेल्प मैरी? डिकन कौन था, उसने मैरी की हेल्प कैसे करी। नाउ डिकन वाज मार्था's ब्रदर। डिकन कौन था, मार्था जो मेड थी उनका क्या था, उसका यंग ब्रदर था। ही हेल्प मैरी बाय प्लांटिंग सीड्स एंड वर्किंग अवे इन द गार्डन। उसने जो मैरी की हेल्प करी, किसमें हेल्प करी, प्लांटिंग सीड्स, सीड्स को प्लांट करने में, एंड वर्किंग अवे इन द गार्डन, और जो गार्डन के अंदर और जो उन्होंने वर्क किया था उसके अंदर किसने हेल्प करी थी, डिकन ने मैरी की हेल्प करी थी। Now, question number 4. Answer these questions with reference to the contest. Okay. Number 1. Perhaps he lives in the secret garden and knows all about it. Okay. Now, question is here. Who said this? किसने ये कहा, यस मैरी सेड दिस, मैरी ने कहा। परहैप्स ही लिव्स इन द, मैरी खुद के लिए बोल रही है शायद वो उस गार्डन में क्या कर सकती, रह सकती और उसके बारे में जान सकती, तो यस मैरी सेड दिस। नाउ सेकंड, हु वाज द स्पीकर टॉकिंग अबाउट? स्पीकर कौन है जो बात कर रहा है उससे, द स्पीकर इज टॉकिंग अबाउट अ लिटिल बर्ड। हमने बात करी थी ना, स्पीकर कौन है जो बात कर रहा है, लिटिल बर्ड, जिसकी हमने बात करी थी, लिटिल बर्ड कौन है, यस रॉबिन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डिड द स्पीकर थिंक ही लिव्ड इन द सीक्रेट गार्डन? स्पीकर ने क्यों सोचा कि वो इस सीक्रेट गार्डन में रहते हैं। नाउ द स्पीकर थॉट, स्पीकर ने सोचा, यस he lives in the secret garden because he was sitting on a tree branch of a secret garden। अब बात किसकी चल रही है, yes he lives in a secret garden, रॉबिन की, इस लिटिल बर्ड की बात चल रही है, yes क्योंकि he was sitting, कौन बैठा था वहां पर, yes रॉबिन, लिटिल बर्ड was sitting on the tree branch of the secret garden, क्योंकि जो सीक्रेट जो गार्डन था उसकी जो ट्री, उसमें जो ट्री ब्रांच थी उसके ऊपर कौन बैठा था, रॉबिन, लिटिल बर्ड। ओके, now, second reference to contest, they must be spring flowers in the garden. Flowers, the garden is not dead. Now, they must be spring flowers. तो वो बात चल रही थी, ये जो कन्वर्सेशन था जब चल रहा था मैरी और डिकन के बीच में थे कि वहां पर क्या गार्डन में क्या था, स्प्रिंग फ्लावर्स थे। गार्डन इज नॉट डेड, गार्डन अभी मरा हुआ नहीं था, मतलब बिल्कुल डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था गार्डन, अभी भी उसके अंदर जो स्प्रिंग सीजन आया था, इस चैप्टर में हमने रीड किया था कि जो विंटर सीजन वो एंड हो रहा था और स्प्रिंग सीजन आ रहा था, तो उसकी वजह से कुछ ग्रीन जो प्लांट्स थे आपको शो हो रहे थे, है ना, तो इस वजह से वो कह रहे कि स्प्रिंग फ्लावर्स हैं तो गार्डन अभी तक डेथ नहीं हुआ। ना क्वेश्चन इज हियर, हु थॉट दैट द गार्डन वाज नॉट डेड? yes obviously the Mary thought that the garden was not dead। मैरी ने सोचा कि गार्डन पूरी तरीके से अभी डेड नहीं हुआ। now second question, which garden was the speaker talking about? किस गार्डन की बात चल रही है जो स्पीकर बात कर रहा है, yes the speaker is talking about secret garden। okay, now number third, what did he or she know that the garden was not dead? किसको ये कैसे पता चला कि गार्डन अभी डेड नहीं हुआ था? आंसर इज he mentioned that the garden is not dead because she noticed, yes she, Mary noticed tiny bits of green poking above the earth। उसने नोटिस किया, मैरी ने नोटिस किया था, तो tiny bits of green poking। अब हम tiny bits of green की बात करते हैं, हम सीडलिंग की बात करते हैं। ओके, सीडलिंग क्या होता है, यस सीडलिंग मीन्स अ यंग plants of a tree has grown from a seed, मतलब सीड में से बिल्कुल ही छोटे से, जो बिल्कुल छोटे छोटे
आप ग्रीन कलर के आप जो प्लांट देखते हो जो अभी अभी ग्रो हुए हैं, हम यंग प्लांट की बात कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सीडलिंग। तो मैरी ने जब नोटिस किया कि अभी अर्थ के अंदर छोटे छोटे से प्लांट्स दिख रहे हैं बिकॉज ऑफ स्प्रिंग सीजन का ना, तो उसको मेंशन हुआ, उसको नोटिस हुआ कि गार्डन अभी भी डेड नहीं हुआ। ओके स्टूडेंट, सो this is all about the question answer. Now tomorrow we will continue this chapter, we will do word wonder of this chapter. Okay student.